Very good morning, all of you. Hope you all are well and doing your homeworks, listening to your parents. And so far as listening to your parents, we don't know whether you're listening to your parents or not, but doing your homework, yeah, you're doing your homework. Not only doing your homework, posting the same in the WhatsApp group, that's the best part of it, and you are doing your homework in stipulated time which is being given to you. जो टाइम दिया है उसी में आप कर भी रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, वेरी गुड. Keep it up. Now, let's come to the studies. From last 2 days, we are studying about plants. Specific part, root is being taught to you. What we studied? We studied that root is underground part of plant, and they are of two types: taproot and fibrous root. Taproot is a single long root from where the other roots or secondary root grow, and whereas fibrous roots are those roots in which it grows in bunch from the base of the stem. Then after we studied about the function of it. Its main function is the roots help the plant to stand erect in the ground, and they suck water and mineral from the soil. Along with that, it has got some special function also. We had studied about one of the special function yesterday, and that was edible root. There are certain roots they are certain clever roots. Some clever roots are there. Those who store their food in the roots, जो अपने खाने को रूट में रखते हैं, जमा करते हैं. कुछ ऐसे क्लेवर रूट्स हैं जो अपने खाने को रूट्स में जमा करते हैं, प्लांट्स हैं. एंड वी बीइंग द मोर क्लेवरर, हम उन रूट को खाते हैं. दे आर सेड टू बी द एडिबल रूट. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट एंड व्हाई इट इज अ रूट. सी, आई हैव गॉट वन कैरेट विथ यू. आई हैव गॉट वन कैरेट फॉर यू. दिस इज द कैरेट. See, the plant of carrot, this is the plant of carrot, stores food in this carrot, this root. This is being edible. This is a root because you can see the hairs, the tiny root coming out of it. This is the main root, and this is the tiny root which is coming out of the carrot. You can see it, na? Yes, it is an edible root because we have it. हम इसे खाते हैं. तो रूट का ये फंक्शन नहीं है खाना, लेकिन ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड रूट. These roots are said to be the modified root because they had modified into a fruit, means they have stored food into it, and we take it as edibility. We eat it, and that is why these roots are said to be edible roots. You can see the little roots coming out of it. I had washed it properly just to make you see that this is an edible root. Okay? So, there are certain plants, certain roots. There are certain plants that store their food in the root, and this is the edible root which is being taken by us. Carrot, radish, beetroot, these are the example of this type of fruit. One more special function of root is, have you seen any person, those who are not able to stand on their feet properly, they use a stick to walk, है ना? They use stick to walk. Have you ever thought of it कि क्यों स्टिक से चलते हैं? आपके दादाजी हों या नियर बाई कोई दादाजी टाइप आदमी हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं, they cannot stand, they cannot walk properly on their own feet. तो वो क्या करते हैं? एक डंडा लेके चलते हैं. They use a stick for their support, ताकि वो गिर ना जाए. Similarly, कुछ ओल्ड प्लांट्स जो बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जैसे लाइक बनियन ट्री, पीपल ट्री, ये जब बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनका एरिया स्टेम का, ट्रंक का वही रहता है, बट इट विल बिकम वेरी ह्यूज, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है. देन दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन. दे नीड टू हैव सपोर्ट. तब नेचर अपना सपोर्ट खुद देता है. देयर आर सर्टेन रूट्स विच हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उनके ब्रांच से कुछ रूट्स नीचे हैंग करते हैं और वो ज़मीन को छूते हैं. और ज़मीन में जैसे ही रूट छुएगा, इट हैज़ द स्पेशलिटी टू होल्ड द सॉइल. सॉइल को पकड़ेगा और क्या होगा? इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट. ये उसको सपोर्ट देगा. डिफरेंट ब्रांचेस से डिफरेंट रूट नीचे आएंगे एंड इट विल गिव अ सपोर्ट. एंड दीज टाइप ऑफ रूट्स आर सेड टू बी एरियल रूट्स. हम आज इतना ही जानेंगे कि वी हैव गॉट एरियल रूट्स. The special function of root is to give support to the plant. Okay, do the homework which is being given after.